हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट इजली इंग्लिश सॉल्यूशन एंड इजी वे ऑफ लर्निंग। आज हम आपके लिए लाए हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश स्कोर 301, जिसका कि एग्ज़ाम होने वाला है। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल रिपीट किए जाते हैं। प्रायः ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या करता है कि इन्हीं प्रश्नों के लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और ताकि सेंस वही रहेगा, आंसर भी सेम होगा, लेकिन होता क्या है कि क्वेश्चन बनाने का तरीका चेंज हो जाता है और कुछ तो क्वेश्चन एकदम लाइन बाय लाइन हूबहू रिपीट हो जाते हैं। तो यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए, जो कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए बहुत बेहद फ़ायदेमंद ये वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिना स्किप किए यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जो कि स्टूडेंट्स इंग्लिश स्कोर के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मैं आपको फटाफट 5 मिनट में बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। यदि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक कॉपी और एक पेन ले करके आप बैठें और फटाफट इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट कर लें, लिखते जाएं, या डायरेक्ट जो है वीडियो को पुश करके लिखते जाएं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो, उनको भी फ़ायदा पहुंचाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2025 फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। पहला जो लेसन है हम लोग का, द लास्ट लेसन, उसका एक क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल। मैं इनके आंसर्स नहीं बताऊंगा अभी, आप आंसर्स बुक से या गूगल से या कहीं से भी सर्च करके और एक आंसर तैयार लेंगे कर लेंगे कॉपी पर, और एग्ज़ाम से पहले उसको अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लेंगे। तो इसके बाद व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल। और ये जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन एम हैमेल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। और ये क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेंच थिंग्स will they make them sing in German, even the pigeons? What does this tell us about the attitude of French men? How did M. Hamel say farewell to his students and people of the town? Question 4. What words did M. Hamel write on the blackboard before dismissing the last class? What did they mean? Or the next question, what a thunderclap these words were to me. What were the words that shocked and surprised the narrator? और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, who did M. Hamel blame when French was unable to answer a question on French participles? और ये नेक्स्ट क्वेश्चन लोस्ट स्प्रिंग से है, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहेब्स नेम। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ was मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से, लोस्ट स्प्रिंग से, द यंगस्टर्स इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स हु हैव बीन डूइंग द माइंड नंबलिंग टॉयल ऑफ बैंगल मेकिंग सिंस लॉन्ग। दिस इज द रीजन दैट द राइटर से दैट लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज एनी जंग से दैट द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन ए विशियस वेब। एनी जंग राइटर हैं इस चैप्टर के, लोस्ट स्प्रिंग के। और ये क्वेश्चन 5, व्हाट डू वी कम टू नो अबाउट द ऑथर ऑफ लोस्ट स्प्रिंग एनी जंग थ्रू हर इंट्रैक्शंस विथ साहेब एंड मुकेश। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मुकेश फैमिली इन लोस्ट स्प्रिंग रिवील अबाउट जेंडर रोल्स। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आप अपना कॉपी ले करके और उसमें आप लिखते जाएंगे, या नहीं तो स्क्रीनशॉट करेंगे और इनका आंसर तैयार कर लेंगे, और एग्ज़ाम से पहले आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे एक बार। हाउ डिड डगलस फाइनली गेट रीड ऑफ द फियर ही हैड ऑफ वाटर। हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA pool affect Douglas? When Douglas realized that he was sinking,
How did the plan to save himself? Why did Douglas go to Lake Wentworth in New Hampshire? Which two frightening experiences did Douglas have in winter in his childhood? What sort of terror seized Douglas as he went down the water with a yellow glow? How could he feel that he was still alive? और ये रेड ट्रैप से क्वेश्चन है. Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? Why did the peddler decline the invitation of the iron master, who was the owner of Ramsjo Iron Mills? Why did he visit the mills at night? Why did the peddler think that the world was a rat trap? Why did the peddler knock on the cottage by the roadside? How was he treated by the owner of the cottage? Explain the metaphor of the rat trap in context of the story by Selma Lagerlof. Or the next question, why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant? Why did Gandhiji feel that taking the Champaran case to court was useless? How did the Champaran peasants react when they heard that a Mahatma had come to help them? Why did Gandhiji object to C.F. Andrews' stay in Champaran? Why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? Explain the possible reasons for Gandhi's quick popularity among the peasants of Champaran. Who was Subhu's enemy? Why? What kind of effect does Ashok Mitran's style of writing have on the reader? Discuss the significance of the makeup room in the chapter Poets and Pancakes. The poet left in utter bafflement after the English poet's speech. Mention two things the speaker could have kept in mind before addressing an audience to avoid such a reaction. Give your rationale for it. Why was the Moral Rearrangement Army welcomed at the Gemini Studios? Account for Subhu's importance in Gemini Studios. What was distinctive about eco-academic writing style? What is the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose? Why do most celebrity writers despise being interviewed? Why didn't Sophie want Jancy to know about her meeting with Danny? Why did Jancy discourage Sophie from entering thoughts about the sports star Danny Casey? Damn that Geoff. This was a Geoff thing, not a Jenny thing. Why did Sophie say so? What thought come to Sophie's mind as she sat by the canal? Why did Sophie long for her brother's affection? Why did Sophie like her brother more than any other person? Why are the young trees described as sprinting? What do the parting words of the narrator and her smile signify? What does the author mean by all I did was a smile and a smile and a smile? A smile does not always indicate happiness. Does my mother at 66 reflect this? A statement. Justify your response with an example from the poem. State the common issues faced by most of the aged in the current times with reference to the poem My Mother at 66. Kamala Das speaks of an old familiar ache. What do you think is the reason for this feeling? Which is the exotic moment that the poet refers to in Keeping Quiet? What does Neruda mean by an exotic moment without rush in this poem, Keeping Quiet? What is the sadness the poet refers to in the poem Keeping Quiet? How, according to Neruda, can keeping quiet change our attitude to life? What are the
different kinds of war mentioned in the poem that the poet is against. Give two reasons why, according to Pablo Neruda, is keeping quiet is essential to attaining a better, more peaceful world. How does a thing of beauty provide us shelter and comfort? Why and how is grandeur associated with the mighty dead? Which objects of nature does Keats mention as sources of joy in his poem, A Thing of Beauty? What are the things that cause miseries, sorrows, and sufferings to men? What spreads the pall and despondence over our dark spirits? How is it removed? Rationalize why Keats uses the metaphor an endless fountain of immortal drink in his poem A Thing of Beauty. और ये आ गया रोड साइड स्टैंड का. वाई डू द पीपल हु रन द रोड साइड स्टैंड वेट फॉर द squeal of break so eagerly? Explain soothe them out of them bits. With reference to the poem The Roadside Stand. Why does Robert Frost sympathize with the rural poor? What news in the poem A Roadside Stand is making its round in the village? State any two characteristics that can be inferred about the poem from the countryside in the roadside stand. What are the difficulties that Aunt Jennifer faced in her life? How does Aunt Jennifer express her bitterness and anger against male dominance? How do denizens and cavalry add to our understanding of the tiger's attitudes? How are Aunt Jennifer's tigers different from her? Why did Aunt Jennifer choose to embroider tigers on the panel? How can we say that marriage was a compromise for Aunt Jennifer? Support your response with two justifications. बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें. कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग.